है वो छुट्टी पे घर चले गए. So and Santanu also was not available tomorrow. So then I thought that today everybody on leave, so we can discuss today only. I hope people will be joining. Let's start. So I'm sure ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम. Okay. So I think I'm meeting first time to all of you. You may not, we have not interacted directly. I hope no problem. तो आज एक्चुअली मैंने बता दिया था आपको ग्रुप में कि क्या डिस्कस करेंगे हम. जो थोड़ा अगर आप कभी भी रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये सब उठ जाता है टॉपिक. तो उसी पे आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे. आपको आप लोग अगर देखते होंगे, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट अगर आपको कहीं यूट्यूब पे शॉर्ट्स दिख गया होगा कभी, तो कुछ दिन पहले एक आया था शॉर्ट्स. एक लेडी कह रही थी कि मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए, मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, जो कि अपने बहन के अस्मिता के रक्षा के लिए ना उसने युद्ध कर लिया और ना ये कर लिया वो कर लिया. So the point is that there are lot of misconceptions are there in the mind of people. कि कोई कोई कहेगा कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, वो तो सीता जी को टच भी नहीं किया उसने, वो लेकर गया, लेकिन फिर भी सोचो हाउ मच ही वाज. सो पीपल nowadays are like they see one small part, that is also misinformation in a demon's life, and then uh, and try to portray him like a divine person. And here is Lord Ram, who is Maryada Purushottam, and people see one small fault, which is not fault, but again, we don't know the actual reality behind it. And then they say that देखो ये व्यक्ति तो ऐसा था. So one of the feature of ignorance is we make one thing everything. No, we make sure that one thing characterizes everything actually. No? So उसका रावण का एक apparent good quality लेके हम उसको पूरा white wash करके उसको बोलते हैं कि ना सब बहुत बढ़िया व्यक्ति था वो. एंड यहाँ राम जी के जो स्पॉटलेस कैरेक्टर है उसमें एक apparent जो हमको सही में इंफॉर्मेशन नहीं है उसको देख के हमें लगता है कि देखो ये तो ऐसे थे. So that we are going to. मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है, लाइक रावण जैसा भाई सही है या राम जैसा पति सही है? क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? क्यों रावण ने टच नहीं किया था सीता जी को? क्या वो कैरेक्टर वाला व्यक्ति था, बहुत ही व्हाट यू कैन से दैट प्रिंसिपल ओरिएंटेड था कि हाँ कोई स्त्री नहीं हाँ बोलेगी तो हम नहीं करेंगे? व्हाट वाज द एक्चुअल सिचुएशन? प्रभु जी, जहाँ तक I have heard, Ravan was given a curse where if he touches a woman against his wish, he'll turn into ashes. Yes, thank you. He did not touch her. So yeah, so the actual reason is that he was not that he was just kind of person like him. The actual reason was he was cursed by Vedvati. उसकी भी स्टोरी थोड़ी सी बता ही देता हूँ, मैं भूल गया है तो. कितने लोग यहाँ पे तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए हैं? अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, इसलिए स्मॉल थिंग वी कैन जस्ट डिस्कस. और आज आपको ही पढ़ना है, मतलब हम एक सेक्शन पढ़ेंगे इन डिटेल, थोड़ा एनालिसिस करेंगे से, तो आपको ही पढ़ना है, हम बीच बीच में थोड़ा चर्चा करेंगे.
इस एपिसोड के बाद। बताओ कितने लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन किए हैं, मैं पूछ रहा था। किसी ने किया है? सुना है नाम आपने? आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है तिरुपति, ने किया है। कितने दर्शन हुआ था? मुझे दर्शन नहीं करा। नहीं किया दीपक ने? कभी आप जाएंगे अगर साउथ तो आपका दर्शन होगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज, कुछ वेदवती का कनेक्शन वहीं से है। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ा। देखो, वेदवती एक कन्या थी जो कि विष्णु को ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो उसने ना तपस्या करी। तो वो जब तपस्या कर रही थी तब रावण उस रास्ते से गुजरा और वो उसके प्रति आकर्षित हुआ। फिर उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया था वेदवती के साथ। तो वेदवती ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, thinking that now this body is polluted, it will not be offered to Lord Vishnu, and then she cursed कि ना आज के बाद अगर तुमने किसी स्त्री को ऐसे टच किया तो तुम मर जाओगे। एंड दैट इज वेरी लॉन्ग बैक स्टोरी। एंड देन राम जी आते हैं और राम जी का था कि एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, मतलब हम ना केवल एक शादी करेंगे। तो उन्होंने वेदवती से शादी बाद में नहीं करी, लेकिन उस वेदवती को एक सेवा मिला था। क्या सेवा था वो कि आपको पता होगा कि जब रावण हर के ले जा रहा था सीता जी को, तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे वो लक्ष्मण जी की आप इससे बाहर मत आइएगा। और फिर वो चले गए थे। वो एपिसोड में डिटेल में नहीं जानना चाहूंगा कि दोनों के बीच में क्या आर्गुमेंट हुआ था थोड़ा। और फिर उसके बाद जब सीता जी को वो बाहर निकल बोला कि आप बाहर आकर के भिक्षा दीजिए और वो सब, तो वो जब बाहर निकली तो अग्नि प्रज्वलित हुई थी। उस अग्नि में एक्सचेंज हो गया था। तो एक्चुअल जो सीता जी थी वो अग्नि देव के पास चली गई थी, जस्ट फॉर काइंड ऑफ टेकिंग रेस्ट और जस्ट लीला हो। और वेदवती जो थी वो सीता बन के सीता का रोल निभा माया सीता बोलते हैं उनको, इलिजुरी सीता, वो बन के रावण के साथ गई थी। So that is one episode. So Vedvati did the exact service of, मतलब in the form of Sita, she did service of Sita and Ram, and in that लीला, so that abduction जो हुआ था वो माया सीता का हुआ था। फिर उसके बाद जब वो वापस आती है सीता जी, जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो फिर से अग्नि परीक्षा करते हैं भगवान राम। तो बाहर के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा था कि to test the purity of the character of Mother Sita. But internally, what has happened that from Agni, the actual Sita came back, and Vedvati again went back to Agni Dev. एंड देन उनका एपिसोड खत्म हो गया, उनका सेवा खत्म हो गया। फिर भगवान कृष्ण लीला में आए, फिर भी उन्होंने उनसे शादी नहीं करी, जबकि इतने सारे सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारी बट इनका नंबर नहीं आया। तो बाद में जब लीला खत्म हो गई तो फिर यशोदा मैया को भी ये था कि अरे लाला का ना हमने शादी नहीं करवाई। कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, वो मथुरा चले गए थे अगर आपको पता होगा तो, फिर द्वारिका चले गए। तो उनकी एक इच्छा थी कि हर माँ को इच्छा होती है कि अपने बेटे की शादी देखूं, तो वो इच्छा उनकी अपूर्ण थी। और इधर वेदवती का भी शादी राम जी से और विष्णु से नहीं हुआ था। तो बालाजी के रूप में भगवान वहां पे आते हैं और वो लंबी लीला है। फिर वो वेदवती जो है वो पद्मावती के रूप में आती है और वहां से उनकी शादी होती है दोनों की। तो जब आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे बालाजी के बारे में, तो बालाजी की जब शादी हो रही थी विष्णु भगवान की, तो वहां पे लक्ष्मी जी उनके साथ नहीं थी। तो उन्होंने कुबेर जो है देवताओं के ये है ट्रेजरर हैं, तो उनसे उन्होंने लोन लिया था शादी करने के लिए। तो कुबेर बोले कि भगवान साहब आप ही का है, आप क्या लेंगे, मतलब मैं क्या आपसे वापस लूंगा? तो नहीं नहीं नहीं, जब मेरे भक्त आएंगे दर्शन करने तो वो
देंगे उससे मैं आपका चुकता करूंगा। जो भी वक्त अभी दर्शन करने जाते हैं कुछ ना कुछ तो दान जरूर करते हैं उस मंदिर में, एज ए इट्स लाइक कंपल्सन। तो वहां पे उनकी शादी हुई। तो कहने का मतलब है कि वो जो आपने बताया कि हाँ उनको कर्ज था, दैट इज वन पॉइंट। अनदर वन कंफ्यूजन इज देयर, पीपल थिंक दैट ना बाली को पीछे से क्यों मारा था उन्होंने, उस पे किसी का कुछ पता है आपको? वन लाइक्स टू ऐड एनीथिंग इन दैट? बाली को गलत गलत बात है ना, वो तो क्षत्रियों को सेवा करना चाहिए है ना। जब क्षत्रिय का रूल क्या है कि सामने वाला अगर अस्त्र नहीं लिए हुए है, उसके पास वेपन नहीं है, तो उसको वेपन देते हैं, उसके बाद लड़ाई करते हैं। आपको पता होगा शिवाजी महाराज जो थे ना वो दो तलवार लेके चलते थे, कि मान लो कोई ओपोनेंट आ गया और उसके पास कोई अस्त्र नहीं है तो पहले तलवार अपना देते थे, उसके बाद उससे लड़ाई करते थे, है कि नहीं? तो बताइए, गलत बात है कि नहीं पीछे से वार करना? हम्म। दो तीन बातें हैं यहाँ पे, उसका भी एक चैप्टर है डिटेल, बट आज उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आज सीता जी के उस पे लिखा था, उस पे पढ़ने वाले थे। बट शॉर्ट में आज को मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या था कि राम जी ने कुछ रीजन दिए थे। एक रीजन उनका था कि अ, पहले तो है कि वो वानर शरीर में है, तो जानवरों का जो शिकार है वो कैसे कैसे भी किया जा सकता है। जानवरों से को शिकार करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने होते कि हाँ हमको सामने से वार करना था। that's not that is one thing. More important than that reason is that हमें कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कोई किसी के किसी, जैसे वो क्या किया था कि सुग्रीव जो को भगा दिया था और सुग्रीव की पत्नी जो थी रूमा, उसको वो भोग रहा था, मतलब उसके साथ उसको उसने वो सम्मान नहीं दिया, जबकि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। सो अगर आप किसी के पत्नी को हर लेते हैं, किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी का सामान लूट लेते हैं, किसी को मारने की चेष्टा करते हैं, तो वो सब व्यक्तियों को ना एग्रेसर्स कहा जाता है। उनको मारने में कोई बुराई नहीं है, उसको आप कैसे ही मार सकते हो। सो दैट इज अनदर थिंग दैट ना ही एक्चुअली ही यंगर ब्रदर की जो पत्नी है वो आपकी बेटी के समान है, एंड देन यू हैव मिसबिहेव विथ हर, सो you should be killed by any means, that's not a rule। फिर भी जब वो उनकी पत्नी ने तारा ने आके बताया तो फिर उन्होंने बताया कि भाई आप चाहते हो तो मैं इसको जीवित कर दूंगा, बट दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू दैट, ना। सो देन वो मान जाते कि नहीं नहीं आपके हाथ से मृत्यु प्राप्त हुआ है तो फिर वो तो सौभाग्य की ही बात है। एंड देन शी एग्रीड, एंड देन शी वाज आल्सो गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट इन सुग्रीव किंगडम, एंड अंगद जो था वो प्रिंस बना। सो दैट्स हाउ लॉर्ड टुक केयर ऑफ दैट। सो मैं आज आपको ले चलता हूँ एक बुक में जो कि बहुत डिटेल अच्छे से एनालिसिस करके हर पास टाइम को लिखा है। मैं आप लोगों को भेजूंगा अभी वो बुक, और वो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर बुक है। जैसे एक बुक है आइडियल वर्शिप वर्सेस आइडल वर्शिप। जैसे अभी आप देखे होंगे कि रामलला का प्रतिष्ठा हुआ है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि अरे डीटी क्या है, लाइक ना वो मूर्ति और ना विग्रह में क्या अंतर है। बाकी जनता को नहीं पता होता, उनको लगता है कि रोड पे जो चौराहे पे जो मूर्ति लगी हुई है और मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है दोनों एक ही है एक्चुअली। एंड देन सम पीपल में टेल यू दैट ना जब जब मुगल लोग आक्रमण करते थे या कुछ ऐसा होता था तो मूर्ति तोड़ देते थे, तो मूर्ति तोड़ दिया मतलब भगवान तो तुम्हारा अपने खुद अपना रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरे का क्या तुम्हारा क्या करेगा। सो देयर आर सो मेनी रीजंस विद द पीपल टेल दैट मिसकन ना there's a whole science behind DT worship and what is pran pratishtha, and then why sometimes protect himself also and devotee also, and sometimes he doesn't protect, and what is the form of basically सिंपल थिंग मैं बताऊंगा कि जो डीटी फॉर्म है ना भगवान का विग्रह फॉर्म जो है वो फुली सरेंडर्ड फॉर्म है डिवोटीज को। उन्होंने अपने आप को डिवोटी को दे दिया, तुम खिलाओगे मैं खाऊंगा, तुम नहीं खिलाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम मुझे सजाओगे मैं सजूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को दे दिया है पूर्णतः। सो it is responsibility of the devotees to take care of the Lord, so that is the form of the Lord deity is.
So that is why he sometimes feels that he is not reciprocating when some attacks is happening and all. But ऐसा नहीं है, जब अटैक हुआ है तो डीटी ने भी अपने को बचाना क्या, बाकी पूरे भक्तों को बचाया उन्होंने। आप अब बंगाल से जितने लोग हैं, तो एक बंगाल में एक बान विष्णुपुर बोल के एक जगह है, आप अगर सर्च करेंगे तो वहां पे एक भगवान का डीटी है जिन्होंने तोप चला के मारा था एग्रेसर्स को, तो तोप अभी भी मंदिर में रखा हुआ है। तो द पॉइंट इज दैट ना, शिवाजी महाराज के समय में भी विठल, जो पंढरपुर एक जगह है, वहां पे विठल जी का डीटी है, उन्होंने शिवाजी के तरफ से लड़ाई करी थी। सो देयर आर लाइक डीटी डायरेक्टली रेसिप्रोकेटिंग आल्सो, सो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड दिस। सो इस तरह के कुछ बुक्स हैं कि आप लोग पढ़ें। आज जो हम आपको बुक ले जा रहे हैं वो है लाइफ विजडम फ्रॉम रामायण ऑन लाइफ एंड रिलेशनशिप करके एक बुक है। हमारे ही इस्कॉन के एक डिवोटी है, बहुत स्कॉलर है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे टीचिंग करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो मेरे को बहुत पसंद है बुक। बताऊं आपको, वहां लोग चैप्टर सीता के बैनिसमेंट पे और करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे जो लिस्ट में नाम आ रहे हैं वैसे मैं पढ़ने के लिए आपको बोलूंगा। तो शुड बी स्टार्ट विथ सीता, व्हाट डू थिंक। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, Prabhuji. तो देखते हैं कितना देर तक हम पढ़ सकते हैं। एक चैप्टर ही आज फोकस करेंगे। तो मैं बोलता तो मतलब मैं शॉर्ट में बोलता, बट लेट्स रीड एंड देन थिंक। सो ये एक चैप्टर है, दैट इज वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो ये बुक है विजडम फ्रॉम रामायण, एंड देन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग, दैट इज रामायण, एंड देन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग, दिस चैप्टर वी आर रीडिंग। Please mute yourself. So, victimizer or sacrificer. Four reflections of Ram's abandoning Sita. So let us see. Yes, Sita, go. पढ़ो। Prabhuji हट गया वो पेज। क्या बोले? वो पेज हट गया। It's not on the screen anymore. I can see it now. Share it. Oh, ये sorry. बंद हो गया। अभी आया? ब्लैक स्क्रीन है प्रभुजी। देखो आएगा। अब आया, अब आया। हाँ पढ़ो अभी। नहीं प्रभुजी, वो हाँ अब बुक है। हाँ पढ़ो। Ram's forsaking Sita is the Ramayan's most challenged and most challenging incident. A man's abandoning his pregnant wife because of an unproven accusation seems troublingly wrong. Let's analyze this using the acronym SEES. SEES, S standing for sacrifice, E for ethical dilemma, another E for esoteric explanations, and S for selflessness. Sacrifice. It is sometimes thought that Ram exiled Sita because he was excessively reputation conscious. Did he abandon Sita just because he didn't want his good name sullied by having a wife suspected to be impure? But if he had been so obsessed with his reputation, then why did he not remarry after sending Sita away? A king overly concerned about appearances would want a trophy queen by his side. Being a queenless king was hardly a reputation enhancer. या तो कुछ लोग बोलते हैं कि ना, वो उनको लगा कि अरे ना लोग क्या बोलेंगे, उसके चक्कर में ना मैं इनको बैन कर देता हूँ। सो दैट्स वन नॉट रीजन। अगर वो उतने रेपुटेशन कॉन्शियस होते सो कॉल्ड ना, तो
वो फिर से शादी कर सकते, वो किंग थे एक्चुअली उस समय। उस युग में क्षत्रियों को मोर देन वन मैरिज अलाउड था, कलयुग में नहीं है, बट दैट टाइम इट वाज अलाउड, so he could have done but he didn't do, so this is one reason. Yes, go on. What happened? Prabhuji, it did not load yet for me. Now it has loaded. I'll start reading. As a wealthy, powerful emperor, Ram could have married anyone of his choice, but he refused to remarry because he wanted to honor his word to Sita. Soon after their marriage, Ram had promised Sita that she would be his only wife. By keeping that pledge lifelong, Ram showed his respect for Sita, thereby rebutting her accusers. If Ram had wanted to remarry, he could have justified giving up that pledge on the grounds of religious duty. As a king, he was expected to perform sacrifices meant for his state's welfare, and tradition mandated that the sponsor perform such sacrifices with his wife. When priests pointed out this requirement and exhorted Ram to remarry, he respectfully but firmly refused. He honored the traditional requirement by making a golden image of Sita and seating it beside him. Prabhuji, can you? Yeah, thank you. Seating it beside him during the sacrifices. By according this honor to her through her image, he proclaimed that he still considered her his wife, and that he still considered her pure. So pure, in fact, that her image could sit next to him in rituals that often required exacting standards of purity. Ethical dilemma. Yeah. So so then yeah, and ना he didn't marry because ना there was a need, because बहुत सारे कुछ ऐसे यज्ञ करने होते हैं जिस समय ना पति पत्नी दोनों को उसमें भागीदार होना पड़ता है, तो यजमान बनते हैं ना वो। तो उस समय भगवान ने उनके डीटी को वहां पे बिठाया, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज़ दे आर लक्ष्मी एंड विष्णु, सो they can do it, but point is that he considered that purity of Sita, that's why he could do it actually, no? And then he didn't marry. Yes, padiye. Ethical dilemma. If Ram considered Sita pure, why did he abandon her? Because the ethical dilemma confronting him didn't seem amenable to any other solution. We need to see the actions of characters in the epics in the light of the prevailing culture and its cherished values. The Ramayana depicts a deeply spiritual culture. Therein, people saw success not just in terms of prosperity in this world, but also in terms of the spirituality cultivated during one's journey through this world. Cultivating spirituality in its highest sense meant developing God's devotion to the source of everything, God, and harmonizing one's whole life accordingly. In such a culture, all relations and positions were seen as opportunities for sacred service, service to God and to others in relationship with Him. One service was the service of exemplifying detachment, especially from things that came in the way of one's spiritual growth. Most people are attached materially to their relations and positions. Such attachments can keep them alienated from God, who is the ultimate provider of everything, including family members, and who is the ultimate shelter after death, when all family members are left behind. Materially attached people are naturally attracted to those with lavish material assets. The person with the most impressive material assets is usually the king. If the king demonstrates detachment by not letting material things come in the way of spiritual cultivation, then the king's example forcefully edifies citizens about the importance of life's spiritual side. So, integral to the king's duty was the duty of demonstrating to his citizens that worldly attachments couldn't sway him from his spiritual dharma. This duty conflicted with Ram's duty as a husband. When Ram heard the accusation leveled against Sita, he was faced with an ethical dilemma. Whereas a moral dilemma confronts us with two choices, one moral
and the other immoral. An ethical dilemma confronts us with two choices, both moral. For resolving an ethical dilemma, we need to discern the higher moral principle and harmonize the lower moral principle as much as possible. Ram's dilemma was ethical because his duty as a king conflicted with his duty as a husband. यस, एक सो यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि राम जी के पास एक तो है कि उनको एग्जेम्पलरी बिहेवियर दिखाना है, एंड देन वन ऑफ द बिहेवियर डिटैचमेंट, दैट कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अगर हमारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आता है, भगवान के जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसके बीच में आता है, तो हम उससे दूर होने, उसको छोड़ सकते हैं, लाइक वो डिटैचमेंट होता है, दैट इज वन। इफ दैट इज कमिंग ऑन द वे, लाइक जैसे कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने बोला कि आप ना भक्ति मत मत करो, देन it is not rule, it is not that you should not obey your father, you should obey your father, राम जी वही सिखा रहे हैं। बट जब I'm not teaching all of you this, I'm just telling you a concept that if that person is coming on the way, then we should respectfully keep a distance, that's ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने उनको पिता कहना छोड़ दिया, उनके घर में नहीं रहे थे, तो सह रहे थे सब कुछ, बट ही वाज प्रैक्टिसिंग भक्ति आल्सो। एंड देन जब नरसिंह देव आए तो उन्होंने नरसिंह देव बोला कि क्या चाहिए आपको, कुछ मांगो। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ बिजनेस करने के लिए नहीं किया है आपकी भक्ति ना। देन आल्सो नरसिंह देव सेड नो नो प्लीज आस्क समथिंग, देन ही सेड दैट प्लीज फॉरगिव माय फादर ना। सो देन नरसिंह देव बताते हैं उनको कि आपका फादर के आपका 21 जनरेशन को मैंने लिबरेट कर दिया है, because you are a devotee in the family. So the point is that the devotees or those who are people who are devoted to God, they don't leave their spiritual life, but don't mean that they become insensitive to other people and all, but obviously they get detached, like they are not affected by their presence or absence, and they not let their spiritual life get affected also. So that is intelligently done, and that is sensitively done, and for that we need guidance. So when you people face any kind of difficulty like this, you can approach us, we'll guide you that how to deal with all the kind of responsibility. But the point is here Ram is there in moral dilemma नहीं है उनको ना। मोरल, दैट इज मोरल डायलेमा मींस आपको चुनना है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, ये सही है और ये गलत है, उसमें से चुनना है, दैट इज वेरी इजी। बट आपको दो सही चीज में चुनना है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि अभी क्या करूं मैं ना, दोनों सही है। लाइक ना एज ए हस्बैंड उनका था कि मुझे रक्षा करनी है इनकी, मुझे प्रोटेक्शन देना, और एज ए किंग ये डिमांड आ गया कि यू हैव टू शो डिटैचमेंट हियर बिकॉज देयर इज र्यूमर स्प्रेड, एंड र्यूमर जो है ना वो फॉरेस्ट फायर की तरह फैलता है, उसको आप ऐसे कर सकते हो, हो जाता है। with Lord Ram, let's go and discuss the second। yes, पढ़िए, इसमें आगे वो खुद बताएंगे, पढ़ो पढ़ो। As a husband, he was duty bound to protect his wife, but as the king, he was duty bound to exemplify and teach detachment to his citizens. If his citizens felt that he was so attached to Sita as to keep her despite her impurity, then they would consciously or subconsciously use Ram's alleged attachment to rationalize their own attachments to unworthy things. Of course, Sita was not impure. She had not left Ram and gone to Ravan. Ravan had abducted her against her will. Ravan hadn't forcibly violated her because he had been cursed to die if he ever violated a woman against her will. He had tried to gain Sita's consent by alternately tempting and threatening her. She had heroically preserved her purity by spurning his temptations and braving his threats for an endlessly long year. Ram himself had no doubts about Sita's impurity, but anticipating people's objections, he had prepared to address them. After the fall of Ravan in Lanka, when Sita was brought into his presence, he had her purity dramatically demonstrated through a test of fire. Sita entered into a fire and emerged
unscathed by dint of her chastity. Moreover, after that test, the gods led by Brahma had certified Sita's spotless character. Yes. Pardon? Despite all the vindication of Sita's purity, if people were still questioning, Ram felt that nothing would ever convince them. If he neglected such people and continued to live with Sita, it would appear that he was attached to her. If he silenced them, he would come off as so blinded by attachment as to be vindictive. He felt that his duty as a king required him to show his detachment from Sita. Exhibiting a stoic spirit of sacrifice, Ram deemed his duty as king more important than his duty as husband, and so sent Sita away to the forest. But he didn't entirely neglect his duty as a husband. He did that duty too because the forsaken Sita was still in his kingdom, and thus indirectly in his protection. When the distraught Lakshman informed Sita of Ram's decision, she was devastated. But soon she regained her composure, understood her lord's heart, and gracefully accepted her part in the heart-wrenching sacrifice that both of them had to be a part of. She didn't resent Ram and didn't poison her sons against their father. She raised them lovingly, accepting with fortitude the role of a single mother that had been thrust on her. Of course, she was not a single mother in the modern sense. She didn't have to single-handedly earn a living and care for her children. After being forsaken, she lived in Valmiki's hermitage, where the matronly female hermits took care of her and helped her to take care of her children. It's worth noting that banishment may not be the best word for describing Sita's abandonment. Banishment implied being evicted from the kingdom into the forest. As had happened to Ram earlier in Ramayana. Though Sita lived in the forest, she was still in Ram's kingdom. She did not have to scour for food, clothing, and shelter. These were arranged Yeah, for in Valmiki's hermitage. yeah, 1 minute. So देखिए यहाँ पे कि सीता जी को भी उन्होंने वन में भेजा और राम जी भी वन में गए, बट देयर इज अ डिफरेंस। जब राम को वन में भेजे थे तो वो अयोध्या से बाहर जाना था उनको, देयर वाज नो फैसिलिटी गिवन फ्रॉम दशरथ महाराज साइड। इट इज जस्ट दैट यू गो एंड मैनेज ऑन योर ओन, बट सीता जी इज सेंट टू एट अ प्लेस ना, के आश्रम में उनकी सारी देखभाल उनकी है ना, उनको किया जाएगा, उनके बच्चों का, और ना उनको औरन नहीं करना, उनको ऐसे ही नहीं भेज दिया गया था जंगल में। देन राम ना लक्ष्मण जी गए और वहां पे उनको छोड़ के आए। एंड एंड सी वाज आल्सो हैप्पी कि उनको ऑलरेडी वो वन में रही है 14 साल, तो उनको वो सीख रहे हैं। और ऐसा कहा हमारे स्क्रिप्चर्स लाइफ में कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसको आध्यात्मिक के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों बच्चों के पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, दैट दैट चाइल्ड कम्स टू बी अ डिवोटी है ना लेटर। सो सी वाज वेरी हैप्पी ऑन दिस ग्राउंड, एंड देन जैसे उनको एक बार झटका लगा, बट सी अंडरस्टूड दैट इफ लॉर्ड हैज डन इट मीन देयर इज सम पर्पस, एंड देन CDD, that's love actually। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में और थोड़ा, बट ये हमको समझना चाहिए कि सीधा उन्होंने जंगल नहीं भेज दिया था। शी वाज स्टिल अंडर केयर ऑफ लॉर्ड राम ओनली, इट वाज नॉट लाइक दैट। एंड देन हाँ, अगर एक प्रूफ क्या है कि सीता जी ने उसको सही से समझा, उसका प्रूफ क्या है कि सी डिडंट गिव पॉइजनस ना थॉट टू देयर सन्स। लव उसको नहीं सिखाया कि तुमको उससे लड़ना है, वो मैं डाइवोर्स ले लूंगी, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, जंगल में गई, मैं तो प्रिंसेस थी ना, मतलब जनकपुर की, मैंने अपना चरण भी जमीन पे नहीं रखा था और मैं खाली पैर ऐसे इतना कष्ट सही। उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने पिताजी की ग्लोरिफिकेशन ही बताई, और फिर बाद में वो लव कुश रामायण राम कथा करते हैं, देन वी नो। सो द पॉइंट इज दैट siege by the side of Lord Ram, understanding the need of the hour. So I would like that someone else to read now.
Thank you, Sita, for this. Anyone? Let me see. We have Deepak. Can you read now? Deepak Kumar and Deepak Yadvanshi, we have both. So first we'll start with Deepak Kumar. Okay. Please. Battery is nice. Okay, Deepak, or should we give chance to mother? Today we have Dr. Saab also. Aniruddha Jana, can you read? Are you there? Yes, Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. So please go ahead. I'll just say esoteric explanation. So this is two regions we saw. One we saw that that sacrifice, and the second was ethical dilemma. Explanation. So when Lord does something, I'll give you some background. One more past time I'll tell you here, and then one is discussed here. So when Lord does anything, now there are so many things happening because of that event. So क्या हुआ था कि एक डीमन था, उसने ना, जैसे आपको पता है ना, हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा, मैं घर के बाहर न मरूं, अंदर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अस्य न मरूं, सस्य। उसको सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया था कि अरे मैं ना बच जाऊंगा, कुछ मेरा नहीं होगा शायद। जब ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि भाई इमोर्टल तो हम भी नहीं है, तो हम तुम कैसे अमरता का वरदान दे दे, तो उसको लगा कि मैं बुद्धि से अमर हो जाऊंगा, उस तरह से उसने लिया था। तो अलग अलग ना असुर जो है अलग अलग तरह के वरदान मांगते रहते हैं सोच के। तो एक असुर ने क्या वरदान मांग लिया था पता है आपको? वो बोले कि जब विष्णु और लक्ष्मी अलग हो जाएंगे ना, तब मैं मरूंगा। तो उसको लगा कि तो श्रीवत्स बोलते हैं भगवान को, उनके छाती पे विष्णु जी रहती है ना। सो दे आर ऑलवेज टुगेदर। सो देन ही टुक दैट काइंड ऑफ वरदान। तो उसको फुलफिल करने के लिए भी उस समय युद्ध हो रहा था उस तरफ, मतलब देव और दानवों में, और उसी समय भगवान सीता फिर से अलग हुए थे। तो दैट इज वन रीजन, बट अनदर रीजन इज मेंशन हियर दैट इज मोर प्रॉपर। This is here. So please read it. Yes. Esoteric explanations. For those seeking explanations for Sita's banishment based on past life causes, the Valmiki Ramayana offers one, and the broader Rama tradition offers many. The epic mentions an ancient curse that ordained the separation of Vishnu and Lakshmi. Once, when the demons were fleeing from the gods led by Indra, they took shelter of the sage Bhrugu's wife, Khayati. Yeah. When the gods asked the demons to be handed over to them so that they would be duly punished, Khayati became incited by a misguided sense of compassion. Summoning her mystic powers, she started attacking the gods, who beseeched Vishnu for help. Her hard-earned win against the deadly demons was being undone because of the Khayati's misplaced protectiveness. To prevent such a catastrophe, Vishnu was constrained to use his own mystical disc, Sudarshan Chakra, for slaying her. When Bhrigu came to know about this, he became enraged. He cursed Vishnu to take multiple births in the material world and, in one such birth, to be separated from his wife, just as Bhrigu was now separated from his. Of course, Rama, as the supreme being, is not subject to anyone's curse. Still, he accepted it out of deference to the sage, and and for furthering his own purpose. The enactment of that curse comprised the chain of events that led to the separation of Ram and Sita, who were Vishnu and Lakshmi incarnated on earth. The Gauriya Vaishnava tradition, a medieval Bhakti tradition with adherents all over the world, explains that the separation of divine couple facilitates Vira Bhakti, devotion in separation. Separation intensifies the devotee's remembrance of Lord, and as the Lord is not a finite person,
but is the supreme person. He is always present in devotee's heart. When the devotee remembers him intensely, he reciprocates by increasingly manifesting in himself in the devotee's heart, thereby intensifying the devotional trance. Externally, such separation seems like agony, but internally it is the summit of spiritual ecstasy. Separation does to love what wind does to fire. Spreads it more and more. When separated from Ram, Sita released such intense devotion. Yeah, so 1 minute यहाँ पे देखो, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन में एक और रीजन मिला कि ऑलरेडी उनको कर्ज मिला हुआ था एक ब्राह्मण से। अब आप कहेंगे कि भगवान को कर्ज मिल जाएगा, वो कैसे होगा ना, भगवान को कर्ज मिल जाता है वो उनको इन्होंने भी, जो दुर्योधन की माता थी, क्या नाम था, गांधारी, उन्होंने भी कर्ज दिया था। so sometimes the curses are also the plan of the Lord, that and then God can make curse also into some plan, that उनको ऑलरेडी लीला करना यहाँ पे आना है तो फिर उससे वो कर लेते हैं। And then another thing is that he can counter curse, and curse may not affect him, but to show as an example that he himself should follow the protocol, so that other people, any big person should not take an excuse, अरे वो तो नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा टाइप। So then he follows, जैसे कि जो भी ब्रह्मा जी ने जिस तरह से भी वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को नहीं मरने का, वो भगवान ने उस तरह से फॉलो किया। वो नरसिंह के रूप में आए कि ना कोई जानवर और ना कोई ह्यूमन बीइंग मिक्सचर है, फिर शाम को मारे, फिर दहलीज पे मारे। तो उतना उनको फॉलो करने का जरूरत नहीं है एक्चुअली ना, कि ब्रह्मा ने इस तरह से ब्लेसिंग दिया है तो मैं फॉलो करूंगा, नॉट नेसेसरी, बट ही डज इट, एंड दैट इज हिज ग्रेटनेस। So we should not think that even God is cursed. God takes curse and doesn't take curse, it depends on him, but he takes it and then convert him into his lila. And then last part विरह भक्ति, that separation, love in separation की बात करी जा रही है। So that is very hi-fi topic for us. We don't have any single very small love also for us, but the concept we should know that when we have intense love, then in separation we can feel it more than union. So that's what is happening here. और हमको ऐसे क्या सीख मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। सेपरेशन डज टू लव व्हाट विंड डज टू फायर। तो जो देखो, फायर दो तरह का होता है, एक मोमबत्ती भी जल रही है उसमें भी फायर है, और एक फॉरेस्ट फायर होता है। तो फॉरेस्ट फायर में जब हवा चलती है ना तो वो स्प्रेड होता है, वो और ज्यादा प्रज्वलित होता है, वो बढ़ता है वो। बट वही हवा जो है वो एक मोमबत्ती को तुरंत बुझा देती है। तो हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए वो है, थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी आप इतना भगवत गीता सुने हैं और हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, तो डिफॉल्ट है कि थोड़ा भक्ति भगवान के प्रति हमारी आस्था है। बट हमको वो थोड़ा थोड़ा वो हम उसको और सुन के डेली हर वीक में सुन के उसको थोड़ा फील कर रहे हैं, थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट लाइक फॉरेस्ट फायर, राइट। सो हमको ये प्रिंसिपल नहीं लगाना चाहिए कि प्रभु जी अभी अब अच्छा सीख गए हैं, विरह भाव में हम अभी भगवत गीता क्लास करेंगे, हम नहीं आएंगे क्लास में, और सेपरेशन से हमारा ना भगवान के प्रति बढ़ जाए। तो हमको अभी भगवत गीता क्लास, चैंटिंग, भगवान के बारे में सुनना, थोड़ा पढ़ना, उससे हमको अभी ज्यादा अटैच होना है, उससे हमको उसके पास आना है, उस एक्टिविटी करना है, ताकि हमारा वो कैंडल जो है थोड़ा थोड़ा लाइट उसका बढ़े। And then this concept will be applicable to you, that even we are separated from God, that time we feel more pain and our love will increase a lot. So this is a different, are you understanding what this is? ये आप सेपरेट मत होइए, आप वीक में आइए, सुनिए थोड़ा 1 घंटा, और थोड़ा जानने का प्रयास करिए, क्वेश्चन पूछिए, है ना, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा, तो दैट वी शुड डू, है ना। चलो, selflessness, that we can relate in our home life. Yes, Aniruddha ji, continue. Oh, sorry. I cannot see the screen. Yeah, it will come. It will come. It has not. It has. Spirit of selflessness. The whole Ramayana is permeated with the spirit of selflessness, a spirit that attains its summit in the separation of Ram and Sita. The mood throughout the epic is not of demanding one's rights, but of selflessly sacrificing one's rights for a higher cause.
When Rama was exiled because of the promise of his father Dasaratha, Ram didn't demand his rights as the rightful heir. He could have argued, I am utterly blameless, yet I am being only in Disherited. I cannot, the next page is not. Yeah. It will come, it will come. Disinherited, but also exiled, as if I were the worst of criminals. And all this just for honoring some undocumented promise made by my father to my stepmother. How unfair. Far from arguing thus, Ram immediately agreed to give up his right for the higher cause of honoring his father's words. He even calmed those who wanted to rebel against the king. On hearing about Rama's exile, Sita too didn't fight for her rights. She didn't claim that she, as a princess, deserved to live in royal comfort. She willingly, even insistently, gave up those comforts for accompanying her husband to the forest. The spirit of selflessness is illustrated by Lakshmana too, when he accompanied Ram to forest. Sita, being Ram's wife, was expected to stick by his side through thick and thin. But nothing of that magnitude was expected from Ram's brother. Yet Lakshman didn't demand his right to royal comfort. Instead, he gave up that comfort for cause of serving Ram. Bharat too demonstrated this spirit of selflessness. He could have ascended the throne, justifying that it had come of his own accord. He himself had done nothing wrong to get it. Yet he didn't. Even when Ram entrusted the kingdom to him, he didn't consider royal luxury as his right. Though he discharged the responsibilities of a ruler, he placed Ram's sandals on the throne and sat at their feet. Emulating his brother's hermit lifestyle, he lived in a cottage outside Ayodhya and ate austere fare. Importantly, none of these characters saw themselves as helpless victims, deprived of their rights. They saw themselves as conscious agents who chose to give up. So, right and wrong and what is our right, that is different when love comes into picture. Love means selfless sacrifice. जो अपने घर में हम अपने घर में देख सकते हैं, माँ जो करती है कि नहीं, वो नहीं बोलते मैं क्यों सुबह सुबह उठूं, 9 महीना मैंने इतना कष्ट सहा, फिर वो हम जब ह्यूमन बीइंग, पता है आपको, ह्यूमन स्पीसीज ओनली, ह्यूमन चाइल्ड, दैट ह्यूमन बेबीज, दे टेक maximum time to grow compared to the other species. Actually, it takes even 5 years just to learn how to eat, how to take bath and whatever. So they don't complain, right, that मैं क्यों गर्मी में इतना खाना बनाऊं, ठंड में इतना सारा ठंड है फिर भी मेरे को इसको ट्यूशन लेके जाना, लेके आना, फिर लंच पैक करो, उनका हेल्थ खराब होता है. So there are lot of sacrifice involved. So when there is family, when there is love, then there is sacrifice. One question. So that's the point going here. पढ़िए. In that same spirit, Sita, on being forsaken, didn't see herself as a victim of a judgmental husband. Recognizing that she had been called to bear a particularly heavy cross, she gracefully, even gallantly, accepted the necessary sacrifice. Those who portray her as a victim do grave injustice to her awesome strength of character. Some people are even more if they. एक मिनट एक समझना चाहिए, अगर हम इस बात को उंगली उठाते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा राम, उससे मुकाबले हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाउ glorious character is of Mother Sita, that she took it as a sacrifice for her husband's duty, right? So हम उसको disgrace कर रहे हैं अगर हम victim बना रहे हैं उनको. तो she was not victim, she was doing her sacrifice actually. Yes, go ahead. Such people are even more if they portray Ram as a victimizer. In this incident, his position is similar to that of Sita, both her partners in an excruciating sacrifice.
Perhaps the best parallel to appreciate Rama's agony in sending Sita away is Dasaratha's agony in sending Ram away. Just as Dasarath wanted with all his heart to offer the best of everything to his son Ram, too wanted to do everything he could do for his wife. After all, she had endured, for his sake, 13 years of austere life as a hermit and 1 year of agonizing life as an abductee. Just as Dasarath was bound by duty to do something that broke his heart, so too was Ram bound by his duty. At least Dasarath could point the finger at Kaikai and could even vent his anger at her machinations. Ram couldn't do even that, for people would have thought him vindictive. So he had to not only give the wrenching order of exiling Sita, but also keep the storm of his anger and agony contained within himself. Thus, just as Dasrath was not punishing Ram too was not punishing Sita. Just as father and son had to make a painful sacrifice for a higher cause, husband and wife too had to make an anguishing sacrifice for a higher cause. यस सो ये हमको समझना चाहिए कि जिस तरह जो सिचुएशन दशरथ महाराज का था जब वो राम को भेज रहे थे, वही सिचुएशन राम जी के साथ था जब वो उनको भेज रहे थे एक्चुअली में. एंड दशरथ महाराज तो किसी को ब्लेम भी कर पा रहे थे कि अरे देखो ये कैके मंथरा ने सब कर दिया, बट राम जी तो किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे. एंड देन ही वाज फीलिंग सो मच पेन इनसाइड. आप समझो ना कि आप जान रहे हो उस व्यक्ति को एंड दैट पर्सन हैज नो फॉल्ट, एंड फिर भी उस व्यक्ति को आपको पनिश करना पड़ रहा है. कितना पेन होता है. जैसे दशरथ महाराज गुजर ही गए उस पेन में, करेक्ट. दशरथ महाराज कुड नॉट लिव लॉन्गर बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट व्हाट ही डिड एंड ही हैड टू डू. रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे पर चाहे वचन न जाए. एक्चुअली कलयुग में हमको कुछ इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, अरे क्या जरूरत है. राम जी को प्रैक्टिकल होना चाहिए था. निकल जाते वहां दशरथ महाराज के पास, निकल गए. फिर निषाद राज तो बोला ही था कि आ जाइए इधर, ये रह जाइए, रह लेते उधर, है कि नहीं. उनका नायका घर था उधर कौशल्या में ना, कौशल राज, उधर जाके रह लेते, चिल मार लेते, है कि नहीं. फिर चले आते 14 साल बाद, क्यों उतना जेल, है कि नहीं. सो in Kaliuga it may seem as impractical sometimes, but we should understand the standards that time actually in the Treta Yuga and in this past times. Okay, so कोई और पढ़ना चाहेंगे? 1 मिनट में बैठ लिए कर लेता हूँ. Thank you. Yes. Yes, come. Yes. Would like to read? Just 2-3 minutes more are there. Yes, Then we can stop. I can read. Deepak, okay, ठीक है. 1 minute. Hope you are getting. Yeah, तो उस पे कुछ लोग आवाज सुनाई दे रही है मेरी, होपफुली. Yes, come. हाँ, तो उस पे कुछ लोग बोलते हैं इस पास्ट टाइम को कि ना वो ये वुमेन के अगेंस्ट इनजस्टिस को लेके ना बात बताते हैं. जो भी आपको सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ना लोग मिल जाएंगे या फिर जो भी इनवियस लोग हैं. So then we'll also discuss that how it is not injustice against women, and then we'll see some more pastimes. Yes, go ahead. Yes, Prabhuji. Injustice toward women. Some people see this incident as representing Indian culture's repressive attitude toward women. But in Rama's forsaking Sita,
meant to be a benchmark for judging all omen based on unfounded suspicions. Not at all. The incident is meant primarily to illustrate the mode of sacrifice. Its specific details aren't meant to be universalized, as is evident from Rama's conduct in other situations. That very Ramayana which describe Rama's abandoning Sita also describe Rama's uh, mercifulness toward everyone, including Omen. Even Omen looked down upon by mainstream society. The say the say Gautam's wife had been literally petrified, turned into a stone because of a curse uh, trying triggered by her Trigger. accidental unchastity. Uh, Rama, far from being judgmental toward her, mercifully released her from that curse and reinstated her in the respected positions of the Sikh wife. The female hermit, Sabri, was treated as an outcast, but Rama graced her by accepting the marriage she offered. Tara had become widowed after the demise of her husband Vali, but Rama ensured that she was given a place of dignity in the uh, Sikanda place. Considering the cultural conservatism of those times, Rama actions were exceptionally inclusive and magnanimous. The Bhakti एक tradition. मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे. बहुत सारे वुमेन के बारे में यहाँ चर्चा करी. अगर भगवान का वुमेन के प्रति इस तरह का भाव रहता तो फिर वो ये क्यों करते. जब जो यहाँ पे गौतम मुनि की जो पत्नी की बात आ रही है, क्या नाम था उनका बताओ. गौतम. यहाँ जो चर्चा हुई ना, गौतम वाइफ अहिल्या नाम था उनका, जो भगवान ने अपना चरण रख के वो पत्थर बना दिए थे. उनके पतिदेव ने मतलब श्राप दे दिया था उनको. तो उसका भी एपिसोड आता है. अगर आप कभी कभी आर्गुमेंट में फंसोगे तो लोग बोलेंगे कि अहिल्या आल्सो वाज ए विक्टिम एंड शी वाज लाइक ना, for one man lust and other man anger, she was the recipient of that. So actually इंद्र जो है वो गौतम मुनि के वेश में आके पहले वो मुर्गा बन के बांग दे दिए बहुत सुबह सुबह. And then when जब वो नहाने के लिए चले गए गौतम मुनि, then he took the गौतम मुनि form and came. But that was accidental unchastity of Ahilya. Ahilya thought that, "Arey, am I so beautiful that even Indra, who has Urvashi and all, he is attracted to me?" So she also for one moment fell for it actually. And that was her mistake. And then जो आए गौतम मुनि ने, उन्होंने तो देखा कि उन्होंने मतलब पीछे जाके they can see past future. So he understood that both are at fault. So then he cursed both of them. But भगवान जब आए तो उन्होंने देखो, कोई भी केवल परफेक्ट व्यक्ति एक ही है पूरे जगत में, जो है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण, और उनमें कोई फॉल्ट नहीं है. बाकी हर व्यक्ति गलती कर सकता है, दैट्स नॉट ए बिग डील. बट जो गलती करके उसको रिकवर करना चाह रहा है, उससे सुधरना चाहता है, बाद में उसको रिपीट नहीं करना चाहता है, उसको चांस भगवान देते हैं, उसको माफ करते हैं, उसको फिर से उसका अपना स्थान देते हैं एक्चुअली ना. तो वो विश्वामित्र की गलती हो या फिर किसी स्त्री की गलती हो, किसी का भी हो, हर व्यक्ति गलती करता है एक्चुअली ना. तो इवन की ब्रह्मा जो है वो भी जीव तत्व ही है. सो ही कैन आल्सो डू मिस्टेक. सो समटाइम्स ना कोई लोग बोला देखो उसने ये कर दिया था, इंद्रा ने ये कर दिया था. अरे they are not god, they are just like they are appointed by the god to do some service. They are empowered beings actually. They are more powerful than us. We also can become that much kind of powerful if you practice. But the point is that they can do mistake, and Lord sees that this person is repenting, then he forgives and gives them the again the normal chance. So that's what Lord did with Ahilya. उन्होंने उसको
फिर से अपने परिवार में वापस दिलाया, उसको शरीर दिया और सब दिया। फिर उसके बाद जहाँ पे सबरी की बात आती है कि वो तो आउटकास्ट थी, फिर वो भगवान उनके यहाँ से जूठा खाते हैं। तो अगर भगवान उस तरह से अगर सोचते हैं, है ना, इनजस्टिस के तरफ, तो ऐसा नहीं करते। वो तारा जो थी, बाली को मार दिया तो तारा को उसका सही स्थान दिया उसके घर में, उस इज्जत से रही वो। सुग्रीव को इंस्ट्रक्शन दिया, उसके अंगद को इंस्ट्रक्शन दिया, है कि नहीं? सो दीज आर द सम सिचुएशन, एंड देन नाउ the writer will probably will talk about the Krishna's how he dealt with that, and that is also very amazing to listen. Yeah, go ahead. Yes, Prabhuji. Uh, the Bhakti tradition explained that the same absolute truth who manifested as Rama manifested later as a Krishna, and Krishna demonstrated as even more inclusive attitude toward women, deemed fallen by society. Once, when he killed the demons named Bhumasura, he Bhaumasura. came. Bhumasura, he came. He came across the many princes who had been abducted by the demons. In the prevailing conservative society, these princes had become permanently stigmatized, even though the demons hadn't violated them, driven by a peculiar idea of gaining religious merit. He had been waiting for an auspicious day to take the princess for himself. Still, because these princes had lived in the demon's captivity, society considered them defiled. They thanked Krishna for having rescued them from the demons and begged him to rescue them from their destitute condition too. When he asked them what exactly they wanted, they requested that he asked them what exactly they wanted. They requested that he accept them as his mid servant. He more than consented, and making them not his mis- maidservant but his queen. He not only reinstated them but also elevated them to the state of royalty in a phenomenally powerful kingdom. Consider the contrast between the lords dealing with Sita and these princes. One, he asked Sita to pass a test by fire, but he didn't ask these princes to undergo any such test. Second, Sita was already his queen, yet he sent her away. These princes were unrelated to him, yet he made them his queen. Sita was already pregnant with his children, so he had a major obligation to her. He had no such obligation to the princess, yet he accepted an obligation to them and reinstated them to respectively. Yes, so that we can understand that वही जो राम है, जो कृष्ण है, दोनों सेम ही व्यक्ति हैं, उनका पर्पस अलग अलग है लीला का, बट द पॉइंट इज दैट हाउ इज डीलिंग विद अ वुमन, है कि नहीं? आप देखो कि भौमासुर ने 16,000 प्रिंसेस को, अलग अलग राजाओं की जो राजकुमारी है, बेटियां हैं, उनको किडनैप करके, और वो कुछ तो ना सबको मैं मार दूंगा या कुछ तो सोच के, वो नहीं होता है, यहाँ पे बता रहे ना प्रभु जी की पेक्यूलियर आइडिया ऑफ गेनिंग रिलीजियस मेरिट। सो वो ना कुछ तो अपने मन में था उसका, उसके चक्कर में सबको रखा था। एंड देन अभी समाज में क्या हो जाएगा, मान लो किसी की बेटी को कोई अगवा करके ले गया और वो कोई कितने दिन तक रख करके फिर वो भेजेगा, तो देन नो वन विल लाइक टू मैरी दैट गर्ल। एंड देन किसको क्या रिस्क लेना है ना, फैमिली आल्सो विल कंसीडर कि अभी इसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। एंड देन दैट इज द सिचुएशन ऑफ दोज प्रिंसेस की वो तो छूट तो गई, उसके भगवान ने उनको छुड़ा दिया। फिर उसके बाद वो बोली हम कहाँ जाएं अब, क्योंकि हमारा कोई घर नहीं है, हमारे घर वाले ही हमें एक्सेप्ट ना करेंगे। तो दैट इज द सिचुएशन ना। देन जिसका बोलते ना, किसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। भगवान ने बोला मैं क्या करूं बताओ, तो उन्होंने बोला कि ना आप हमें दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हम अपना जीवन आपको सेवा करके हम ना बिता लेंगे। भगवान
जब कोई उनके सामने उस तरह से दीनहीन अवस्था में जाता है ना, और ऐसे भी जो कि भक्ति के भाव से, तो भगवान उसको ऊंचा स्थान ही देते हैं। भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, मेड सर्वेंट नहीं, आई विल मैरी ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स हाउ ही मैरिड। अब अभी लोग लोग सीधे बोल देंगे, देखो कृष्णा ने तो 16,000 शादी की, क्यों किया, क्यों किया? अरे क्यों किया? जिसको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, जिसको कोई नॉर्मल नहीं, ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट नहीं करता अपने पत्नी के रूप में, उसको उन्होंने डिग्निटी के साथ ना, एक ना रॉयल्टी के साथ उनको स्थान दिया है, और उसके लिए महल बनाया है द्वारिका में। और ऐसा नहीं था कि एक ही महल में एक एक रूम दे दिया और ना एक एक रूम ले लीजिए, 16,000 रूम हमारे पास तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी एवरी this out of 60,000 this princess, every princess who became the queen of Krishna were having their own palace. And Krishna is not कि ठीक है मैं कभी आऊंगा आपसे मिलने। Krishna used to live with each and every one, and that Krishna can do because he is God. And that is why we should not be hopeless in any situation if we call see, एक तरफ देखिए उनका सिचुएशन कि कोई अपना घर वाला और उनको कोई दूसरा व्यक्ति उनको पत्नी के रूप में स्वीकार न करेगा, उसको जब उन्होंने भगवान की शरण ली तो भगवान ने उनको स्वीकार किया और वो स्थान दिया जो कि बड़े बड़े लोग तरसते हैं, लाइक है कि नहीं। तो आउट ऑफ 16,108, 16 सॉरी ये 16,100 प्रिंसेस यहीं पे थी, बाकी 8 मैरिज भी था, वही भगवान को उन लोगों ने रिक्वेस्ट ही करा था, इस तरह से उनकी शादी हुई थी। तो सो देन जो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं कि देखो सीता जी को तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी ली वहां पे रामेश्वरम में, बट इनको तो कुछ भी नहीं बोला, उनको एक्सेप्ट कर लिया, है कि नहीं। सीता उनकी क्वीन थी, उनको उन्होंने बाहर भेज दिया, बट ये तो कोई भी नहीं था, भगवान का कोई संबंध एक तरह से नहीं है, मतलब इस जगत में, मतलब वो दूसरे किसी की बेटी हैं, कहीं से हैं, बट उनको भगवान ने वो स्थान दिया, है कि नहीं। तो आप समझिए कि भगवान का जो भाव है हर जीवात्मा के प्रति, व्हाट टू टॉक ऑफ लेडीज और ह्यूमन बींग्स ऑन व्हाट एवर ही टेक्स केयर ऑफ द एनिमल्स। हम हमेशा क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि 4 डिग्री पे जो है वो पानी का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। वो भगवान का प्रेम है उसके लिए, एक्वेटिक्स के लिए। तो अगर वो नहीं होगा ना तो पूरा पूरा जो आपका पॉन्ड है वो एक साथ जम जाएगा और सब मर जाएंगे उसी समय एक्चुअली में। तो 4 डिग्री जब टेम्परेचर सराउंडिंग का होता है तो सरफेस वाटर भी, जो लेक का वाटर है सरफेस वाटर, वो भी 4 डिग्री पे आता है। और जैसे वो 4 डिग्री वाटर होगा वो सबसे भारी है, क्योंकि उसके उस पे उस जगह पे उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो वो नीचे चला जाएगा, वो बॉटम पे चला जाएगा पॉन्ड के। और बाकी जब सरफेस टेम्परेचर, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब जो वाटर है ये सब हल्के हैं 4 डिग्री वाले वाटर से। 4 डिग्री वाटर नीचे रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा वो कभी, क्योंकि वो सबसे हेवी है। और बाकी सरफेस पे देखो 4 डिग्री से 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ, फिर 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री वाटर, फिर थोड़ा देर बाद 0 डिग्री आइस बन जाएगा। और आइस जो होता है वो इंसुलेटेड हो जाता है ना, तो फिर वो ट्रांसमिट नहीं होती, और नीचे का जो बॉटम पे वाटर वाटर रह जाता है। तो पूरे विंटर सीजन में पॉन्ड के नीचे वाटर रह जाता है, जिससे कि मछलियां और बाकी तो जो एक्वेटिक्स है वो जीवित रह जाते हैं। तो भगवान तो सबके लिए व्यवस्था करके दिए हैं, एंड देन हाउ विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज डिवोटी हु टेक सरेंडर, दैट्स हाउ इट इज। सो यहाँ तक आप पढ़िए एक और पैराग्राफ, फिर मैं किसी और को बोलता हूँ। Let me see how much it is. 1 minute. Yeah, this is end only. So, yeah. पढ़ो पढ़ो. So we are going late, I think. But it is just this page only. मैं पढ़ दूँ? मैं फिर खत्म करता हूँ जल्दी. The point of this contrast is to illustrate that the Lord is too great to be reducible to any mundane characterization based on any one incident. The Lord's activity, known as Leelas or pastime, are enacted to serve varying purposes. Accordingly, different pastimes demonstrate different qualities. As Ram, his pastime primarily demonstrate the principle of sacrifice. As Krishna, his pastime primarily demonstrated the principle of compassion. Okay. Inspiration for selflessness. The Ramayana, extreme examples of selflessness, can inspire us to infuse a healthy dose of selflessness into our relationship. Significantly, Indian society that has drawn enduring inspiration from the Ramayana is characterized by robust family relationship. In many parts of the world, family are falling apart
but in India, the family structure is still strong. Much of the strength comes from the readiness of family members to sacrifice for each other. Because हम वहां से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, इसलिए उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट करा है ना, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होना चाहिए ना, जो चारों भाइयों में जो संबंध था, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। आज के समय में क्या होगा, मान लो 4 भाई है, पिताजी ने किसी को घर निकाल दिया, दूसरे भाई खुश हो जाएंगे, चलो भाई मेरे को 3वीं बट दो निकल गए साइड से तो ठीक है, बाकी दोनों बांट लेते हैं, चलो भरत शत्रुघ्न अब हमारा ही राज्य है, एक्चुअली ना उधर ही रोक देते हैं उन लोगों को। सो देन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कलयुगा स्टैंडर्ड्स अगर आप उसको मैच करना चाहेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मिसमैच है। अभी के भाई ऐसे नहीं होते ना, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड कलयुगा, राइट, द डिग्रेडेड एज। So we should know the standard which they have set, but still we are drawing some inspiration from our own religious texts and then Lord's pastime. That's how still India, you can सारी जो सभ्यताएं हैं जो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ी थी, सब खत्म हो गई. Only this civilization is still continuing. Why? Because we have scriptures like Mahabharata, Ramayana, and then we have Gita. Appreciating Raman's forsaking Sita as an act of supreme sacrifice harmonizes with the Ramayana's seminal starting question: who was the ideal person? The eponymous epic declares Ram the ideal person. A person who abandons his pregnant wife can hardly be considered ideal, but a person who consistently demonstrates the virtue of selflessness, no matter what it costs him, even if it costs him separation from his pregnant wife, that person is indeed extraordinary. And when both husband and wife demonstrate such selfless spirit, meditating on them, those exalted exemplars can offer immortal inspiration. So yes, so हमको देखना चाहिए कि what kind of personality they are. They can go to that extent to demonstrate this virtue of selflessness and dutifulness. So उन्होंने उनका जो राज धर्म था वो राज धर्म जो था वो पति धर्म और राज धर्म में जब पति धर्म और राज धर्म में जब कंफ्यूजन आए, कॉन्ट्राडिक्शन आया, then he has to choose the duty of a king over husband, and that's how he could do it. कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा आता है जब दो चीजों में चुनना होता है, बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, बट किसको चुनते हैं वो इसीलिए हमें हमारे लाइफ में मेंटर्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज लाइफ इज नॉट दैट इजी. अर्जुन क्या हुआ था भगवत गीता में, पहले बताओ. अर्जुन भी कंफ्यूज में आ गया था कि ऐसा नहीं था कि उनको युद्ध करने से डर लग रहा था, अरे क्या होगा, मर जाऊंगा. नेवर इन द गीता ही टेल्स दैट ना, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा अभी. तो ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि एक तरफ क्षत्रिय धर्म है. क्षत्रिय धर्म में क्या है कि जो एग्रेसर्स है, जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको, कि जो किसी को मारने का प्रयास करता है, किसी का धन हड़प लेता है, किसी की पत्नी को, जैसे द्रौपदी के साथ उन्होंने इंसल्ट किया था, तो वैसा जो लोग होता है उसको मार देना चाहिए. मतलब उस समय कि एटलीस्ट क्षत्रियों का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस तरीके से उनको मारना चाहिए था. बट कुल धर्म क्या है कि अपने बड़े लोगों को हम नहीं मारना चाहिए, गुरु को, पिताजी को, भाई को, पितामह थे तो उनको उन पे बाण नहीं चलाना चाहिए. तो वो कंफ्यूज हो गए दो के बीच में. देन कृष्णा कम्स एंड helps him. So even Arjuna was not a normal person. He was overly qualified, right? Now biggest archer of the time, है ना, शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ था, बट लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा जब हमको समझ में आता है कि क्या करना है कि नहीं. So one of the definition of intelligence is to know what to do when we don't know what to do, and that is to pray, है कि नहीं. तो उन्होंने वही किया. And then Krishna was in front of him, then he could take guidance. Still the same message is in front of us. The Gita is in front of us. The devotees are in front of us who are senior to us, who have already learned it, and also in the life also they are ahead, right? So they can guide us, and then we can go on this path successfully. हम हमेशा बताते हैं ना बच्चों को कि अभी अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ पता है आपको. इंडिया में अंग्रेजों ने, देखो, मुसलमान लोग जो भी आक्रांता लोग आए, जैसे अभी रामायण मंदिर बना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा, तो उन्होंने मंदिर तोड़ा बट विश्वास नहीं तोड़ा, आस्था नहीं तोड़ी थी. बट जब अंग्रेज आए ना तो उन्होंने आस्था ही तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि भाई एवरीथिंग इंडियन इज बोगस एंड एवरीथिंग वेस्टर्न इज गुड. और अभी भी हम वही ना स्लोगन पे चले जा रहे हैं. एंड देन वन मोर स्लोगन दे गिव देम, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर ओल्ड एज, एंड दैट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज
कि लाइफ क्या है कि लाइफ इज वेरी डायनामिक एंड देन टू लिव ए लाइफ वी नीड ए मैनुअल एक्चुअली। जैसे हमारा नाम ना, हम अपने लाइफ के साथ अगर बिना कुछ जाने, बिना मैनुअल के एक्सपेरिमेंट अगर लैब में करोगे तो क्या होगा बताओ। लैब में चले गए, मैनुअल देखा नहीं, सीधे टेबल पे गए, निकाल लिया कुछ, तो ये ना ये ट्यूब वो ट्यूब, उसमें कुछ कुछ लिक्विड डाल के कुछ कलर बना दिया, बाद में 1 घंटा खत्म हो गया, फिर जाके टीचर को जमा कर रहे हैं कि सर ये ले लो ना, मेरा एक्सपेरिमेंट है। टीचर बोला था ब्लू कलर आ रहा था, आपका तो रेड दिख रहा है कि नहीं। तो टाइम नहीं है ना फिर आपका, तो टाइम टाइम खत्म हो गया उसी समय, है कि नहीं। फिर ना फिर दूसरा बार एक्सपेरिमेंट करिए। तो हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैनुअल पढ़ लेना है कि हाँ ठीक है भाई, किस डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंट को ले जाना है, तो जो एक्चुअल कलर आ रहा है वो आना चाहिए। तो सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओल्ड एज में मैंने देखा हूँ, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, कोई ओल्ड एज में प्रैक्टिस शुरू नहीं करता है। जो लाइफ वर्क किया है ना वही इंटेंसिफाई होता है। वो काउंट करते रहेगा, आई ना कांग्रेस का क्या हुआ, बीजेपी का क्या हुआ, मेरा कितना पैसा है अकाउंट में, मेरा बच्चा लोग मेरा देखभाल नहीं करता है, ऐसे समय आ गया है देख लीजिए, यही सब फिलोसफी कुछ। बट दे डोंट टर्न ऑल ऑफ ए सडन। और आपको बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने एनर्जी भी तो चाहिए ना। आपको धाम जाना है, तब कई कई भगवान पहाड़ पर बैठे हैं, वहां चढ़ के जाना है ना, कभी फास्टिंग करनी है, कभी कुछ करना है, वो सब नहीं हो पाता है यूथ में देना है। And then more importantly, what Prabhupada is teaching us, what we are practicing is loving devotional service. We want to develop love for God as Sita is loving Ram, as Bharat is loving Ram, like as Lakshman is loving Ram. Okay, है कि नहीं? So then we also want to love someone, and then and it's not that we just want to love God. If we love God, then we love everyone, because then we can relate, so we can see the other people in connection with the God, that okay, this is my parents, and my parents are also part and parcel of the same God whom I am serving. So if I love my parents, if I do my duty nicely, the Lord will be pleased. So in our duty, so then our connection, our all relationship also will be spiritualized actually, na. Then if some friend is there, then we can give some spiritual gifts to them. So that becomes that friendship become spiritualized. Okay. So there are so many benefits for that, and thank you for joining. It became late. पहले दिन ही मैंने डिस्कशन किया, उसी लेट हो गया, अगले दिन से पता चलेगा तब आएंगे नहीं।